Okay, students, so let us look at this question. A CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. Average scores for the first 10 and the last 10 tests are 20 and 30. Then the total number of tests taken by him is. Let's assume the total number of tests taken by him is n and let's assume the average to be x. So can I say यार total of all tests will be equal to n into x. ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट इनटू द एवरेज. अब वो बोल रहे हैं कि अगर पहले के 10 टेस्ट को हम छोड़ दें, तो पहले के 10 टेस्ट को अगर मैं छोड़ दूं, सो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट n minus 10 टेस्ट. सो आई राइट हियर टोटल ऑफ आखिरी के, है ना, टोटल ऑफ ऑल लास्ट n minus 10 tests. This will be equal to the number of tests, which is n minus 10 into the average. Average increases by 1, so it becomes x plus 1. ऐसे ही students we can find total of all first n minus 10 tests, right? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आखिरी के 10 टेस्ट को हम छोड़ दें, तो आखिरी के 10 टेस्ट को अगर मैं छोड़ दूंगा, that means we are talking about first n minus 10 tests. In that case, the average decreases by 1. So number of tests n minus 10, average decreases by 1, so it becomes x minus 1. We also know the first 10 tests की average is 20, so I can say that total of first 10, that is 10 into 20, which is 200. And if we talk about total of last 10, that also we know is equal to 300. Now let's make the equation, students. देखें, अब सारे टेस्ट का टोटल है n इंटू एक्स, है ना, सारे टेस्ट का टोटल है n इंटू एक्स. इसमें से यार अगर मैं पहले 10 टेस्ट का टोटल माइनस कर दूं, पहले 10 टेस्ट का टोटल मुझे पता है, विच इज 200. So can I say, students, this will give us the total of last n minus 10 टेस्ट. ये टोटल आ जाएगा कि इसमें से मैंने पहले 10 वालों का टोटल माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो बचे हुए टेस्ट हैं लास्ट n minus 10 टेस्ट, उनका टोटल आ जाएगा, विच आई नो इज n minus 10 into x plus 1. n minus 10 into x plus 1. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं सारे टेस्ट में से आखिरी के 10 टेस्ट का टोटल माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से पहले n minus 10 टेस्ट का टोटल आ जाएगा, दैट इज n minus 10 into x minus 1. Now mind you, obviously if you subtract the two equations, अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दूं, तो आप देखें nx तो कैंसिल ही हो जाएगा. माइनस 200 प्लस 300, दैट विल गिव अस 100. राइट स्टूडेंट्स, पहली वाली इक्वेशन में से मैंने दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस किया है, करेक्ट. तो आप देखें n minus 10 तो कॉमन ही आ जाएगा, and along with it we'll get x plus 1 minus of x minus 1. Now x plus 1 minus of x minus 1 will eventually give us x gets cancelled, 1 plus 1, that is 2. So this will give us n minus 10 is equal to 50, and students n comes out to be 60. बस यही हमें निकालना था, number of tests. So 60 is the correct answer. It is a tough one. You have to take variables and make equation. I hope this is clear to everyone.